યોજાયો। અનંત નેશનલ યુનિવર્સિટી ખાતે 7મો દીક્ષાંત સમારોહ યોજાયો। આ દીક્ષાંત સમારોહમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે જોહો કોર્પોરેશનના કો-ફાઉન્ડર અને ચીફ સાયન્ટિસ્ટ પદ્મશ્રી ડોક્ટર શ્રીધર વેમ્બુ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। તે ઉપરાંત યુનિવર્સિટીના પ્રેસિડેન્ટ અજય પીરામલ, પ્રોવોસ્ટ ડોક્ટર સંજીવ વિદ્યાર્થી અને બોર્ડ મેમ્બર્સ હાજર રહ્યા હતા। શ્રીધર વેમ્બુએ કહ્યું કે અર્બન પ્લાનિંગની વાત કરું તો જેમ જેમ આપણા શહેરો વિકસતા જાય છે તેમ તેમ રહેવા યોગ્ય ઓછા બનતા જાય છે। આ એક પડકાર છે જે ફક્ત આજની પેઢી જ ઉકેલી શકે છે। કઠોર ડિઝાઇન લિંકિંગ સાથે હું વિદ્યાર્થીઓને એટલું જ કહીશ કે ક્રિએટિવ રીતે વિચારો અને કોઈ પણ બાઉન્ડ્રીઝમાં ના રહી તમે શું બનાવી રહ્યા છો અને શા માટે બનાવી રહ્યા છો તેના પર પ્રશ્ન કરતા રહો। એવી વસ્તુઓ બનાવો કે જેનાથી ભવિષ્યની પેઢીઓ પ્રશંસા કરે, તેઓ વર્ષો સુધી યાદ રાખે। ડોક્ટર શ્રીધર વેમ્બુ જોહોએ નોબેલ પ્રાઇઝ વિજેતા વીએસ નાયપોલના એક વાક્યથી શરૂઆત કરી। તેમણે કહ્યું હતું કે સ્વતંત્ર ભારતમાં ભારતીયો એવા લોકો જેવા હતા જેમનો કોઈ ઇતિહાસ નથી। આ એક ખૂબ જ મજબૂત વાક્ય છે અને તેમાં સત્ય એ સત્ય છે। આપણે પોતાના યુગના વિઝ્યુઅલ, કલ્ચરલ, આર્કિટેક્ચરલ ચિહ્નો પાછળ છોડતા નથી। આપણી પાસે આપણો પ્રાચીન વારસો છે, પણ આજે આપણે શું બનાવી રહ્યા છીએ? આપણી પેઢીની કઈ બિલ્ડિંગ છે જે 1000 વર્ષ સુધી ટકી રહેશે? સદીઓથી આપણા ઘરો આપણા વાતાવરણને અનુરૂપ મટીરિયલ્સથી બનાવાયા હતા। ભારતમાં એક જ કોન્ક્રીટ મોડલની નકલ થાય છે, પરંતુ સારી રીતે જાળવણી કરાયેલ માટીનું ઘર સદીઓ સુધી ટકી શકે છે। रिपोर्ट बाय अश्विन लिंबाचिया, अहमदाबाद। मैं स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में फैकल्टी हूँ। आज हमारा 7th कॉन्वोकेशन है जिसमें हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर वेम्बू आए, जिन्होंने आर्किटेक्चर के बारे में बहुत अच्छे से बातें बताई कि कैसे आज भी हम पुराने आर्किटेक्चर को वैल्यू करते हैं और क्यों हम मॉडर्न आर्किटेक्चर जो यूरोप या अमेरिका से आया, क्यों हम उसको मिमिक ना कर कर हम कैसे जैसे इंडियन लोग जैसे गांव में जैसे हम क्लाइमेट को ध्यान में रखकर वैसा आर्किटेक्चर हम प्रैक्टिस करें, उसके ऊपर बहुत एम्फेसिस दिया और बहुत खुश थे कि हमारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। हमारे जो थीसिस टॉपर्स थे वो अलग अलग कम्युनिटीज़ को, कोई बस्तर में, छत्तीसगढ़ में, कोई मालधारी कम्युनिटी, तो कोई अजरकपुर में, इस तरीके के प्रोजेक्ट्स पर ही काम कर रहा था। सब लोकल टेक्निक्स, इंडियन मेथड्स को यूज़ करके इस चीज़ से वो बहुत ही खुश हुए। आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में 5 बेस्ट प्रोजेक्ट्स थे, जिसमें से एक प्रोजेक्ट मालधारी कम्युनिटी के लिए नए अकोमोडेशन कैसा बनेगा उसकी बात कर रही थी। एक बस्तर छत्तीसगढ़ में एक म्यूज़ियम बना रही है उसकी बात कर रही थी। एक रिसर्च प्रोजेक्ट था जो राजपूताना पेंटिंग्स में विमेन का क्या स्टेटस था उसको समझ रही थी। एक लड़की अजरकपुर जो क्राफ्ट एरिया है उसको रीडिज़ाइन कर रही थी। तो सभी प्रोजेक्ट्स एक्चुअली कोर इंडियन इश्यूज़ को एड्रेस कर रहे थे और इंडियन वैल्यूज़ से ही उसको रीडेवलप कर रहे थे। स्टूडेंट्स को यही मैसेज मैं देना चाहूँगा कि हमें शुरू हर चीज़ इंडिया से ही करनी है, हमें इंडिया के लिए बनाना है और जैसे इंडिया बनाता है वैसे हमें वर्ल्ड के लिए बनाना है। हमारे पास सब कुछ है, हमें बस उसी चीज़ को आगे लेकर जाना है। मेरा नाम डॉक्टर विक्रांत है। मैं अनंत स्कूल फॉर क्लाइमेट एक्शन में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ एंड अनंत फेलोशिप फॉर क्लाइमेट एक्शन का डायरेक्टर हूँ। आज अनंत नेशनल यूनिवर्सिटी में 299 स्टूडेंट्स का ग्रेजुएशन हो रहा है, जिसमें 11 लोग अनंत फेलोशिप फॉर क्लाइमेट एक्शन से ग्रेजुएट कर रहे हैं। उसमें से 4 लोगों को बेस्ट थीसिस अवार्ड, फेलोशिप अवार्ड मिला है। एंड ये अनंत फेलोशिप फॉर क्लाइमेट एक्शन इज बेस्ड ऑन practices where people come out with innovation with respect to change in climate. This year 11 लोग ग्रेजुएट किए हैं